Hello everyone, welcome back to this course. We at Econiti here are covering the Straighten Your Stats series for the Quantitative Economics course of semester 7 at the Delhi University. So this is in this lecture so far, whatever we have covered, we are going to wrap that up, right? And what I would like to call this lecture is a bridge, all right? So the way to think about it is that whatever you have done so far, right, and whatever you're actually going to do in this course, which is your semester 7 course, this particular lecture of ours, this one will act as a bridge that will connect the concepts that we have learned in these two courses, right? So there are some things that we have done, right, and there are some things that we are going to do. An understanding of how these are linked is crucial, and this is what we're going to do today. You can think of that whatever you have done so far is, well, it's not simple, but it's simpler. It's simpler to what you will be doing in this course. So I believe that already by looking at the syllabus, you have an idea that this is not going to be a trivial or simple course. It is a very advanced course. So no doubt it is it's not simple, and definitely whatever you've done so far is simpler, but it is also so it's not only tougher in terms of understanding the concepts, understanding the intuition. It is also tougher from the point of execution, from the point of implementation. So what you will realize is that even if you have a good understanding of all the concepts, of all the math, all the algebra, of all the stats, the techniques that we're going to use now are difficult to execute because of their data requirements mainly, right? Because of the requirements in terms of data and because of the requirement in terms of setting up the experiment. Okay, so anyways, so these things will become clearer. But first of all, the task at hand is to understand what the bridge is, and then the next task would be to conceptually understand कि ये चीजें कह क्या रही हैं. तो आज के lecture में we will just talk about how we are linking what we have learned to what we will do. Now, as I told you, पिछले lecture तक we were basically, so when we moved across econometrics, we started with the very simple linear regression, and before that we also covered the types of data, which will also come in handy now that we will do things other than we'll use data other than cross-sectional data. But anyways, so we did the simple linear regression model, and then we moved to the multiple linear regression model. And once we did that, we then looked at how or what happens or what is the issue that gets created when one by one the underlying assumptions get violated, right? So we started with multicollinearity, which is not exactly violation of any assumption, but that does create problem in terms of the efficiency, in terms of the error variance, in terms of the variance of the coefficients, right? Then we talked about violation of the assumption of homoscedasticity, right? So we said that when that happens, again, the issue is with variance. The variance formula that you're working with is not correct. And then you can do two things. You can either, work with a different model, which is your GLS, or you can just correct your variances, which will not be minimum anymore, but they'll still be correct, right? So, but till now, the issue, the good thing was that in most of the cases, OLS was doing fine, right? Now today in this lecture, we will see what happens. And this is what I told you. The star assumption is the zero conditional mean assumption. And we'll see what happens when that gets violated. All right. So we'll begin with, first of all, understanding the assumption में कह क्या रहा है, क्यों हमने zero conditional mean लिया हुआ है, और तब क्या होता है अगर वो violate होता है. All right. So let's get started. All right, so what we're going to do is look at the violation of the star assumption, and this is the link that will get us on board the Quantico course. So star assumption kya hai? Star assumption was our basically that the expected value of the error term given the independent variables
is 0, which we said that this was the zero conditional mean assumption. ठीक है, VCM. Now let us build this topic under various points. So the first point that I want to discuss is the difference between correlation and causation. Now, think about it. We were working with the example of asking DU students about their satisfaction levels, right, with the 4-year program. Okay? Now, when you have any two variables, right, you know के हमने already discussed भी किया, you've done it in your courses, that you can simply find out what is their correlation, which is nothing but their covariance divided by their variances, their standard deviations, right? What does a covariance mean? Something that we already discussed. Covariance का मतलब है how the two variables are linearly related, है ना? So what we observed was that how they moved around their means, and if one variable was going too much above its mean, and that meant that the other variable is also going too much above its mean, then we are talking about a positive covariance. But covariance, as I told you, captures only linear relationship. ठीक है? उसके बाद अगर you look at the expression of the beta क्या है, which is the regression coefficient, right? If you look at, suppose, any regression equation, suppose you regress y on beta naught plus beta 1 x, ठीक है? अगर ये तुम्हारा मॉडल है ना? And when you estimate it using OLS, then we said that beta 1 hat जो है और beta 1, in fact beta 1 भी जो है, this, the expression for beta 1 is or can be written as this. So it is the covariance between x comma y divided by the variance of x. ठीक है? You can easily get this beta 1 का जो formula है, उस formula में you divide it by the sample size and so on, or the in the entire population you go with the variances and you get this expression. So what this means is that if you run a simple regression, right, and this applies for multiple regression also, but let's work with a simple regression example just to keep things simple. Simple regression में मान लो कि ये कोई regression equation है, and you run this, beta 1 statistically क्या कैप्चर कर रहा है? Beta 1 is essentially capturing the covariance between the two variables, है ना? अब ये बात ठीक है कि covariance एक linear relationship है and blah blah blah, but the idea is that when we talked about covariance, जब हमने stats में covariance की बात की थी, तो हमने कहा था कि ऐसा कोई ग्राफ है जिसमें these are your x values and these are your y values, and you know, suppose this is how you plot them and you observe this kind of a pattern, right? In this graph, suppose x variable जो है वो what was that? NEP, right? So what is your this was your NEP variable, right? और यहाँ पे x variable was your either marks or your gender or whatever, right? We tried to plot it along different dimensions. So then this same thing, right? We made no claims about के marks cause NEP. अगर हम सिर्फ अगर let's forget that we are doing a regression. Let's just think कि हमारे पास दो variables है ना? हमने x पे marks लिया, y पे NEP का satisfaction level लिया और ऐसा एक plot आया. But हम ऐसा भी तो बना सकते हैं ना? There's nothing sacrosanct about this. Suppose on the x variable we take the NEP satisfaction levels, and on the y variable we take these scores. Positively related है, ऐसा ही तो आएगा ना? Then if there is nothing differentiating these two statistically इसमें भी कोई causal claim आप नहीं कर सकते हैं. You cannot say that marks, or suppose it's a positive correlation,
positive relationship that you observe. You can't say that higher marks cause higher satisfaction with NEP levels. Statistically तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये एक कोवेरियंस है. You're just seeing how two variables are varying in relation to each other. ये है statistically. अभी इसको समझते हैं थोड़ा बहुत और मतलब a bit more intuitively or for the kind of examples that we do in econometrics. Again, continuing with the same example. So we say that suppose, as I said, मान लो के this is your NEP satisfaction levels, and you are seeing that how does it vary with your CGPA. तो इसका मतलब कि अगर beta 1 had positive आता है, we are saying that it varies positively with CGPA, right? But to say that a higher CGPA causes a higher satisfaction level with NEP is claiming too much. Now, why do I say that? Remember, हमने क्या कहा था कि one of the things, right? If you have to attend an extra year in college, then one thing that you need is more family income, क्योंकि वो साल दिल्ली में रह के पढ़ाई करनी है ना, तो उसमें खर्चा लगता है. दिल्ली में रह के पढ़ाई करनी है, अगर फोर्थ ईयर करना है तो कुछ और एडिशनल रिसोर्सेज भी करने हैं, डिसर्टेशन लिखना है, यू नीड much more resources, you need much more money. So one thing that may be different between people who are happy with NEP and who are not happy with NEP is their family income. हाँ, वो फैमिली इनकम अभी इस मॉडल में हमने इग्नोर किया हुआ है. हमने क्या बोला है, एरर में हो सकता है वो फैमिली इनकम, राइट? एंड वी ऑल्सो नो कि हायर इनकम एंड CGPA इज ऑल्सो पॉजिटिवली कोरिलेटेड. जो एक अच्छे घर से आ रहा है बच्चा, राइट, उसको उसके पास इतना टाइम है दैट द पर्सन कैन give more time to studies. Parents are also educated most likely. Resources हैं coaching के लिए, tuition के लिए, extra समय है पढ़ने के लिए, compared to someone who is coming from a poor background, where the person goes back home and probably the person has to also do household chores, also go to work somewhere as part time. तो जनरली अगर ये हम माने कि ability सबकी सेम है, ability is equally distributed, still you will see differences, and you will see that people with better family income are also people who get higher marks. ठीक? So now what you observe is जिसकी family income ज्यादा है, उसका CGPA भी ज्यादा है, and suppose you observe कि उसका NEP भी ज्यादा है. तो क्या गारंटी है कि ये CGPA की वजह से जो हमको दिख रहा है वो एक्चुअली ये वाला रिलेशनशिप है? एक्चुअली family income is the effect of family income is showing up as a coefficient, as a positive coefficient of CGPA. If you ignore family income, right, तब तुम you cannot make this claim that higher CGPA causes a higher satisfaction with NEP, right? This is one of the ways in which there can be an issue with your claim to causality. There could be an omitted variable. Another, एक और एग्जांपल देखते हैं ना. तो इसमें हमको दिखा कि कॉजल क्लेम बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लेम है ना. अगर हमको ऐसा कुछ रिलेशनशिप दिखता भी है तो भी हमको ये दिखेगा कि there may be something missing that we have not captured. इसको हम बोलते हैं, so this kind of a variable is called an omitted variable. And if you are claiming causality, an omitted variable can confound your claim. ये है language. ठीक? Confound your claim का मतलब अगर कुछ ऐसा है तुम्हारे एरर टर्म में जो तुम भूल गए हो, है ना, तो फिर तो तुम्हारा claim to causality तुम नहीं claim कर सकते. Let's look at another example. Suppose if your sample
or if your rather population is fourth year students, where you see that whether NEP improves your job prospects, right? Or so what you do is तुम जाते हो और तुम देखते हो कि जो भी बच्चे फोर्थ ईयर किए जिन्होंने, ठीक है, और उनका जॉब मार्केट में प्रोस्पेक्ट कैसा है compared to those students who did not do it, right? So then the problem is that NEP is not compulsory. NEP is voluntary. If you find that those who did the fourth year also had better job prospects, then the problem is that those who did fourth year are different, are fundamentally, intrinsically different from those who did not do fourth year, right? Suppose this is your population, and your the question that you're asking is the fourth year of college, or does the fourth year of college improve job prospects, right? And suppose the answer, in this answer, what you do is you look at a student, whether or not she enrolled in fourth year, and then you look at whether or not, she was employed by the end of it or within 1 year. See? And then you find that those who were enrolled in fourth year were also more or less employed by the end of 1 year, as compared to, and they were more, the chances were higher as compared to जिन्होंने भी पहले 3 साल में कॉलेज छोड़ दिया था. ठीक है, so what you find is that students with 4-year college had better job prospects compared to students who dropped after 3rd year. And iske basis pe, the conclusion that you have drawn is that 4th year or the NEP, मतलब NEP में जिसमें कि 4-year college program है, 4-year causes better employability. This is your conclusion. Can you see the problem with this conclusion? The problem is that you are essentially comparing apples and oranges. 4th year is not compulsory. It is voluntary. इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने इनरोल किया, वो जो इनरोल नहीं कर पाए उनसे कहीं ना कहीं डिफरेंट है, या फिर they are coming from better families, right? Or they are anyways good in studies, right? Or they are just more motivated, they have better aptitude for this kind of academic stuff, and therefore they also have better aptitude for like they are intrinsically more employable in the kind of job markets that we have. So you see, the problem is ki this is not a controlled experiment. Now let us think about what we mean when we say that we want to make a causal claim. यहाँ पे no doubt your observation has been that those who do 4 years have better employability, are more employable, have better employability prospects, and blah blah blah. But I'm telling you, what I'm cautioning you against is making a causal claim that it is the 4th year that caused this higher employability. And the reason is that the 4th year is a voluntary program. इसके हम और भी एग्जांपल्स कर सकते हैं, जैसे कि एक, इफ यू हैव रेड द बुक फ्रीकोनॉमिक्स, इट्स अ वेरी इट यूज्ड टू बी अ वेरी फेमस बुक व्हेन वी वर इन कॉलेज, एंड हम सब ने पढ़ रखी थी, और इट्स अ वेरी फन रीड. आई होप यू हैव रेड इट. इफ यू हैव नॉट रेड इट, इट्स अ वेरी चीप बुक, यू कैन बाय. इवन इफ यू स्टिल रीड बुक्स, आई प्लीज होप दैट यू रीड बुक्स. भूल गए हैं हम तो, मतलब रीडिंग्स भी नहीं पढ़ रहे हैं आजकल. प्लीज
Please read that book. It's a very fun read. And once you read it, you will find a lot of such examples, right? And it's a wonderful book. So इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि तुम कॉजालिटी में घुसने से पहले वो किताब पढ़ो। तो उसमें ना बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि जो लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं, सपोज देयर आर कंडक्टिंग ए सर्वे ऑन ओल्ड पीपल एंड द ओल्ड पीपल हु वर एडमिटेड टू हॉस्पिटल्स, द a higher proportion of those people actually died as compared to those old people who were not admitted to hospitals. So, for example, say 25% of old people who were admitted in hospitals, 25% उनमें से 1/4 of them die, while only 10% of the people जो admit नहीं होते हैं hospital में, only 10% of them die. The conclusion that was drawn was ये मतलब कोई news article था and it was a sort of breaking news type की चीज थी कि hospitals are killing people. If you get admitted to a hospital, you have 1 in 4 chances of dying, and instead if you stay home, then you have only 1 in 10 chances, 1 in 10 chance of dying. What is the issue? इशू ये है कि हॉस्पिटल में सिर्फ वही लोग जाते हैं जिनकी हालत ऑलरेडी बहुत खराब होती है, उनके बचने के चांसेस ऑलरेडी कम होते हैं, राइट? इफ दीज पीपल इन फैक्ट स्टेड आउटसाइड द हॉस्पिटल एंड डिड नॉट गेट एडमिटेड, मोर ऑफ देम वुड हैव डाइड. 25% मर रहे हैं, हो सकता है 50% मर जाते, राइट? नाउ इट कुड बी दैट हॉस्पिटल वाज एक्चुअली किलिंग पीपल, दैट्स वन थिंग, बट दैट कैन नॉट बी सेड without further investigation, which means without actually checking the claim to causality. हॉस्पिटल में जो जा रहे हैं वो इंट्रिंसिकली डिफरेंट हैं उनसे जो हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, जिसको जरूरत नहीं पड़ी, जिसकी हालत इतनी खराब नहीं है, वो नहीं गए हॉस्पिटल में, तो ऑब्वियसली उनकी हालत नहीं खराब है तो वो उतना उनका मोर्बिडिटी हाई नहीं रहेगा ना भाई. ऑब्वियसली दे विल हैव हायर चांसेस ऑफ सर्वाइवल. तो हॉस्पिटल की गलती नहीं है, ये जो तुमने दो एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर किया है इसकी गलती है, ठीक? Another example, where you're trying to see whether or not midday meals are good for student scores, ठीक है? So midday meal scheme क्या है? जब मतलब एक तो उसका obviously purpose था कि बच्चों का enrollment बढ़ाया जाए schools में, and the other thing was that see nutrition is a very important component of your cognitive development. अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा तभी दिमाग काम करेगा. If you don't get nutrition, your brain becomes stunted, especially in the growing ages. तो आइडिया ये भी है कि जब बच्चे हेल्दी खाना खाएंगे तो ऑब्वियसली उनका जो है परफॉर्मेंस, उनका ब्रेन डेवलपमेंट, उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्कूल मटेरियल विल आल्सो बी बेटर, राइट? सो सपोज सम रिसर्चर इज ट्राइंग टू सी कि जो लोग अगर किसी स्कूल में मिड डे मील है, राइट, तो क्या उस स्कूल में का परफॉर्मेंस बेटर है, ठीक है ना? इसका एग्जाम्पल सपोज इन दिस अनदर मिड डे मील एग्जाम्पल, suppose midday meal example, all right? In this, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि you look at a school, right? So you do a school level analysis and sorry, yeah, so you do a school level analysis and you see that in every school, you look at the proportion of kids who are eligible for midday meals, okay? So let's call that variable MDM or PMDM, proportion of kids eligible for midday meals, ठीक है? And then you look at so midday meals are till class 5 or 8, I guess. तो उसके बाद तुम मान लो कि उनका फाइनल कोई स्टैंडर्डाइज स्कोर देखते हो, क्लास 10 में उनका परफॉर्मेंस देखते हो. सो देन यू लुक एट द एवरेज स्कोर इन क्लास 10th, ठीक है? दोनों स्कूल लेवल वेरिएबल्स हैं. यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन एक स्कूल है. हर स्कूल में यू लुक एट इन स्कूल आई दैट व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ पीपल ऑफ किड्स आर एलिजिबल फॉर मिड डे मील्स. मिड डे मील्स किन बच्चों को दिया जाता है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के बच्चों को, ठीक है ना? एंड देन यू लुक एट द एवरेज स्कोर इन दैट स्कूल इन क्लास 10 कि भाई जब ये बच्चे फिर आगे चल के क्लास 10 का एग्जाम दिया इन्होंने, तो फिर
क्या कैसा स्कोर था on an average, how did the school perform, right? And what you observe is that when you so this is your y variable and this is your x variable, and when you regress the class 10 score on this variable proportion of MDM in school I, you find that your beta 1 hat is less than 0. And then you try to conclude, like one straightforward conclusion would be that midday meals are bad for school performance. हेडलाइन मिल गई तुम्हें, ब्रेकिंग न्यूज मिल गया ना। अरे मिड डे मील से तो बच्चों का मतलब स्कूल परफॉर्मेंस गिर जा रहा है भाई। यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, अगेन, मिड डे मील्स किन बच्चों को दिया जाता है? उन बच्चों को जो पुअर हाउस होल्ड से आते हैं, ठीक है। नाउ थिंक अबाउट दैट यू हैव टू स्कूल्स। इन वन स्कूल मिड डे मील, लाइक ये वाला जो वेरिएबल है, इन वन स्कूल दिस इज वेरी हाई, राइट? इन अनदर स्कूल दिस इज वेरी लो। नाउ what would be different between these schools? In the school in which the proportion of students eligible for midday meals, जब ये बहुत हाई है, तो इसका मतलब क्या है? इन schools में there is a large or there is a huge proportion of kids who are coming from poor families, as compared to schools in which this is very low, right? Which means कि इस स्कूल के ज्यादातर बच्चों को मिड डे मील्स की जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी अच्छे खासे घरों से आ रहे हैं। अब अगर तुम इन दोनों स्कूल्स का देखोगे तो यू विल ऑब्वियसली फाइंड, आई मीन यू आर वेरी लाइकली टू फाइंड, कि जिन, तुम ऐसे सोचो मिड डे मील्स भूल जाओ, जिन स्कूल में ज्यादातर बच्चे अच्छे घरों से आ रहे हैं उन स्कूल में तो ऑलरेडी क्लास 10 का परफॉर्मेंस बेटर ही होगा ना, compared to a school in which majority of students are from weaker sections of the society. What is happening? There's this missing variable ना पीछे। असल में बच्चों का बैकग्राउंड उनके स्कोर्स अफेक्ट कर रहा है, और तुम क्या कर रहे हो? तुम एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर कर रहे हो। तुम उन स्कूल्स को कंपेयर कर रहे हो जहाँ पे ज्यादातर बच्चे जो हैं वो अच्छे फैमिलीज से हैं, टू स्कूल्स विच हैव अ लॉट ऑफ किड्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज। तो बच्चे तो पुअर फैमिली से हैं ही, बट थिंक अबाउट दो स्कूल्स जहाँ पे बच्चे पुअर फैमिली से हैं, वो स्कूल भी ऑफन हैज लोअर रिसोर्सेज। सोचो तुम कंपेयर करो एक प्राइवेट स्कूल इन दिल्ली से जहाँ पे कोई मिड डे मील नहीं खाता है ना, एंड यू कंपेयर इट टू अनदर स्कूल इन सम विलेज इन विच majority of students are eligible for midday meals and probably all of them eat it. तो क्या गलती यहाँ मिड डे मील की है? गलती तुम्हारे एक्सपेरिमेंट डिजाइन की है। तुम सोच रहे हो यू आर ट्राइंग टू कंपेयर this rural school with this urban school, and what you've missed is the crucial link between the school resources and the family income of the students, which is ultimately getting into the score variable, but तुमको बीच में ये मिड डे मील घुसा के तुम उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हो। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ क्लेमिंग कॉजालिटी। ऑलराइट, सो आई होप कि इस एग्जाम्पल से कॉजल क्लेम के दिक्कतें और what are the issues with causal claim, this you have understood. Now the examples that I gave you were stark, right? But even if suppose you did get a positive relationship, tabhi bhi you should question. So what happens is, one thing, note of advice that I want to give you, अगर ऐसा रिजल्ट आता है ना, अगर ऐसा रिजल्ट आया in which the result was counterintuitive, goes against what you expected, of course you will question it. तो मिलेगा कुछ तो गड़बड़ था ना, कहीं से तो मेरे को डेटा में दिक्कत लग रही है या मेरे एनालिसिस में दिक्कत है। But what happens if you actually found that it was positive? Suppose you found that beta 1 hat was actually greater than 0. Would you believe it? Even if you are ready to say no, your answer should be yes. You will
investigate this claim also. क्योंकि बात सेम है, स्टेटिस्टिकली प्रॉब्लम सेम है. Just because something agrees with our prior expectation, our beliefs, our values, doesn't mean that we should not investigate it. Doesn't mean that we should not question it. Question everything. Question everything. अगर ये आया है, हो सकता है इसमें भी कोई दिक्कत हो सकता है बच्चे मिड डे मील के लिए एलिजिबल हैं सारे के सारे, बट उस स्कूल में कभी मिड डे मील मिलता ही ना हो. तब तो मिड डे मील की एलिजिबिलिटी से थोड़ी स्कोर बढ़ जाएगा, खाने से बढ़ेगा ना. तो यहाँ पे कोई और कहानी चल रही हो सकता है. Just because it suits your belief, it suits your story, don't stop questioning it. बड़ा लाइफ लेसन है. Let's go ahead. All right. So the next thing that we are going to see is that what exactly we mean when we say that we want to make a causal claim. ठीक है? And that is basically that we want to compare apples with apples, oranges with oranges. And this in economics we call Ceterus Paribus. Ceterus Paribus माइक्रो में किया ही होगा. Ceterus Paribus का क्या मतलब है? सिंपली मतलब ये है कि एवरीथिंग एल्स रिमेनिंग द सेम. यही है. इस केस में कैसे फिट होता है? हम क्या कह रहे हैं? Suppose we said that kids who are or let's say that let's do the 4 year वाला example, है ना. तो अगर तो हम 4 year वाला example करेंगे कि whether the 4th year of college adds another thing extra. One way in which you can improve upon it is that बच्चों के हाथ से डिस्क्रिशन हटा दो, चॉइस हटा दो. तब हर बच्चा 4 साल कॉलेज कर रहा है ना, सिर्फ तुम्हारे जैसे बच्चे नहीं. Every kid is doing a 4 year college. And before this 4 year program came in, every kid was doing a 3 year college by compulsion. उसमें तो कोई छोड़ने का स्कोप ही नहीं था. सपोज 4 year में भी बीच में ड्रॉप करने का कोई स्कोप नहीं है. So everyone is doing things by compulsion. So there is no what is called selection bias. ठीक है? We'll work more on these terms later. But this is a case of selection bias. Where people of certain kind self-select into certain groups. जैसे हॉस्पिटल वाला. More ill people with higher death risk, self-select into going to the hospital. जिनका हेल्थ रिस्क नहीं है, they self-select into staying at home. Similarly, इस केस में, लेकिन अगर हम सिलेक्शन हटा दें, अगर हम चॉइस हटा दें, then we can make a we can have a better claim to causality. It will still not be, but suppose अगर हम कर भी दें, so then what we are saying is पहले बच्चे 4 साल, पहले बच्चे 3 साल ही कॉलेज करते थे, अब बच्चे 4 साल कॉलेज करते हैं. तो अगर इन बच्चों का एम्प्लॉयबिलिटी इंप्रूव हुआ है, राइट, एवरीथिंग एल्स रिमेनिंग द सेम, ceteris paribus, then we can claim that 4th year causes an increment in employability. Okay? Ceterus paribus मतलब ये that when you are comparing two groups and when you're seeing कि भाई एक में कोई चीज का असर हुआ, एक में हुआ कि नहीं हुआ, then you should be able to, a claim to causality requires that your comparison is ceterus paribus, everything else remaining the same. अगर तुम कंपेयर कर रहे हो लोगों को जो कि हॉस्पिटल गए और नहीं गए, तो somehow you have to control for the fact that all of them have the same level of chance of death. ओके, तब होगा असली एक्सपेरिमेंट और तब होगा क्लेम टू कॉजालिटी. तो सेट्रस पैरिबस का मतलब एवरीथिंग एल्स रिमेनिंग सेम. जो तुम दो लोगों को या दो ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हो, द ओनली थिंग दैट दे डिफर is in terms of what is called the treatment. हॉस्पिटल वाले केस में तो लिटरली द ट्रीटमेंट, ठीक है. बट इन अदर केसेस ऑल्सो दिस इज द लैंग्वेज दैट यू यूज. विल टॉक मोर अबाउट इट जब हम एग्जाम मतलब बिल्कुल ही कोर्स के बारे में बात करेंगे. बट द आइडिया इज दैट इफ यू आर लुकिंग एट टू ग्रुप्स, then the ceteris paribus would mean that apart from
one party one party going to the hospital, the other party not going to the hospital, there was no difference between the two, right? So then suppose you have this example that we did, right? So ये कौन सा था हमारा हॉस्पिटल वाला, right? So death का suppose probability, and this is your beta naught, beta 1 hospitalization, right? So then इस error term में ऐसा कुछ भी नहीं हो जो इन दो ग्रुप्स के अक्रॉस चेंज हो रहा, right? If in the error term, suppose you have a death risk, when will change in the number of people who actually died, right? When can this be entirely attributed to beta 1? जब delta E is equal to 0, है ना? मैथमेटिकली सब तरफ डेल्टा लगाओ तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे बेटा 1 बाहर आ जाएगा, है ना? डेल्टा 1 बाय से दिस डेल्टा एच आई हो जाएगा. सो डेल्टा एच आई सपोज बाय 1 है ना? सो एज आई टोल्ड यू, एच आई इज हॉस्पिटलाइजेशन और नॉट, तो ये एक बाइनरी वेरिएबल है. 0 है मतलब नहीं हुए, 1 है मतलब हुए, ठीक है? सो डेल्टा एच आई इज 1. सो दिस इज इक्वल टू बेटा 1 जब ये डेल्टा ई आई 0 हो, विच मीन्स दैट वेन यू, इसका क्या मतलब है डेल्टा ई आई 0 मतलब when you switch from HI0 to HI1, when you switch from no hospitalization to hospitalization, nothing in the error term changes. These people don't have a higher morbidity risk. These people don't come from a richer family. These people, don't, I don't know, whatever other things affect your Y variable. This is what Ceterus Paribus means in, algebraically. When you go from one group to the next, कौन से दो groups हैं? Hospitalized, not hospitalized, ठीक है? When you go from one group to the next, nothing in the error term changes. Ceterus Paribus. Then you make a causal claim. When you go from 3-year to 4-year college, nothing changes. Although not a good example, क्योंकि हो सकता है अगर 4-year college कंपल्सरी हो तो बहुत सारे बच्चे कॉलेज ही नहीं ज्वाइन करें, हो सकता है, राइट? अ लॉट ऑफ पीपल डोंट ज्वाइन करें तो 4 साल नहीं कर पाएंगे भाई, ठीक? सो देन not a very good example, but suppose it was the case, suppose education was compulsory, और suppose college education free था हमारे देश में, ठीक है? College education and boarding and lodging and fooding, everything was free. In that case, 3-year compared to 4th year, better claim to causality. जो सबको पढ़ना ही है ना? तो 3 साल पढ़ रहे थे, अब वो 4 साल पढ़ रहे हैं, तो अब अगर 4 साल वालों का एम्प्लॉयबिलिटी इंप्रूव हुआ है, then you make a claim to causality, because when you went from 3-year to 4 years, nothing changed. Not their family incomes, average family incomes, not their average CGPA, क्योंकि सबको ही करना है ना? कोई चॉइस की बात ही नहीं है. there is no self selection happening into any one group. This is what a claim to causality means. You can claim causality if you have Ceterus. You can claim Ceterus Paribus. All right. So now let us go to the third topic that I want to discuss in this case, which is why do we then assume that particular assumption? जो कि क्या है? So third is where we are going to talk about that. What is the intuition behind ZCM, है ना? और इसका क्या मतलब है कि हम देखेंगे कि ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ यू गिवन x है,
यू को कभी मैंने ई लिखा है, कभी एप्सिलॉन लिखा है, अनऑब्जर्वेबल, बात सेम है, इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी एवरेज एरर है ना, एरर का मतलब जो भी बाकी चीजें तुम्हारे वाई को डिटरमिन कर रही हैं, इस केस में सपोज योर डेथ रिस्क, राइट? सो लेट्स वर्क विद एन एग्जांपल वेयर let's not keep it zero, let's call it some constant. ठीक है, I'll make it zero in a while. Suppose it's some constant, suppose this is the assumption, right? Mainly assumption यही है, वो zero एक simplified version है उस assumption का. But let's work with this, right? What does this mean? This means that the expected value of error given x1 is equal to c, which is equal to the expected value of u given x2, which is equal to for all the values of x. मतलब अगर हमारे केस में x1 है, सपोज दो ही x1 है ना, हॉस्पिटलाइजेशन या नॉन हॉस्पिटलाइजेशन, hi इक्वल टू 0 और hi इक्वल टू 1, दो ही ग्रुप्स हैं, तो हमने तो दो ही वैल्यूज लिए हैं x के। इस सिंपल केस में देख लेते हैं। इसका मतलब है कि वट एवर इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब एवरेज में जो एरर क्या है, द इंट्रिंसिक, मतलब किसकी कितनी तबीयत खराब है ना, जो एवरेज तबीयत खराब है लोगों की, व्हेन दे आर इन द नॉट हॉस्पिटलाइज्ड ग्रुप, इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एवरेज में जो लोगों की तबीयत खराब है जब वो जब वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, which is saying this same assumption. It means that whatever is the average error that does not differ by the value of your x variable. एक और एग्जांपल वुलरिच का बात कर लेते हैं। So Woolrich says that in one of the cases, suppose you are looking at the effect of a fertilizer. ठीक है, तुमने प्लांट लगाया और फिर देखा कि फर्टिलाइजर को अप्लाई करने से, सम फर्टिलाइजर दैट यू आर अप्लाइंग, वेदर और नॉट द प्लांट इज एबल टू ग्रो बेटर, राइट? सो यू हैव टू प्लॉट्स ऑफ लैंड and you in one of them you apply the fertilizer, in another you do not apply the fertilizer. ठीक है, and whatever you observe, now think about that, what would ceteris paribus mean in this setting? If you want to have a causal claim, अगर तुम कहना चाहते हो कि हाँ फर्टिलाइजर की वजह से मेरा कुछ रिजल्ट ऑब्जर्व हुआ है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, उसकी बात नहीं। If you want to claim that fertilizer has caused a certain amount of growth or degrowth in the plants, what would you like to control? What would ceteris paribus mean? पहली बात, ceteris paribus would mean कि दोनों के seeds एक जैसे हों। Average quality of seeds should be the same whether or not the fertilizer was given or not given. जो लैंड है उस लैंड की फर्टिलिटी सेम हो, जिस भी लैंड पे तुमने लगाया है उसका जो भी एवरेज फर्टिलिटी है, ग्रुप्स के कैटेगराइजेशन पे, ट्रीटमेंट पे, ये जो एच है ट्रीटमेंट, इस पे डिफर ना करे। ठीक है, जो तुम उसके बाद पानी देते हो उसमें, उस पे डिफर ना करे, एंड वट एवर एल्स यू थिंक कुड अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, दैट शुड नॉट डिफर by whether or not the plants got the fertilizer or did not get the fertilizer. This is ceteris paribus. ठीक है, इसका ये है इंट्यूशन जो हमारा स्टार assumption है उसके पीछे। Now the only thing is that why do we like equate it to zero? It's because कि zero is just any constant and it just drops out, और कोई रीजन नहीं है। तो अगर इसका जीरो है तो इसका भी जीरो है। It's just a constant. You just chose a constant which worked well for you. That's all. All right. The main idea is that you don't compare apples and oranges. अगर फोर्थ ईयर वाले बच्चे इधर जो हैं वो वैसे बच्चे हैं जिनका सीजीपीए वैसे भी ज्यादा है, क्योंकि वो ही बच्चे फोर्थ ईयर तक कंटिन्यू करेंगे, तब तुम उनको कंपेयर नहीं कर सकते थर्ड ईयर वालों से।
थर्ड ईयर वालों के कुछ सपने अलग है भाई, उन्हें कुछ और काम करना है, तो तुम क्यों कंपेयर कर रहे हो इन लोगों को? अगर वो लोग जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, वो इसलिए एडमिट हो रहे हैं क्योंकि वो बीमार ज्यादा है, तो पहले ही उनका वैसे भी हायर डेथ रिस्क है, तो तुम उन्हें कंपेयर मत करो जो लोग हॉस्पिटलाइज नहीं हुए। अगर कर सकते हो तब तुम्हारा क्लेम टू कॉजालिटी है। Alright, and this essentially means that whatever is the average for one group should not change as you go to the other group, right? Delta E should be equal to 0 as you switch from h equal to 0 to h equal to 1. और इस कोर्स में ultimately the first unit, in fact the first unit, you will be talking about causality. How can you make a causal claim and how do you establish causality? तो अभी तक हमने जो भी किया है उसमें हमने कभी causality की बात नहीं की। इनफैक्ट हमने बात नहीं की क्योंकि हम implicitly ये assumption हमेशा लेकर चल रहे थे, right? This is what we were working with. So then we did not talk about it, and we did not talk about it because we did not want to justify or not justify this. क्योंकि ये बहुत ही हैवी क्वेश्चन है भाई, और इसको करने के लिए एक दूसरा कोर्स बन गया है, इसलिए ना इसको थोड़ा इग्नोर ही करते हैं इसमें। कि हम मतलब दिस इज समथिंग दैट इफ इट होल्ड्स तब हम बढ़िया काम कर रहे हैं, होल्ड नहीं करेगा तो हम कॉजलिटी क्लेम नहीं कर पाएंगे भाई। ठीक है, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्या मतलब है इसका, नाउ वी अंडरस्टैंड। And up in this course in unit 1, you will see that what kind of experiments, right? The randomized control trial, what kind of study designs, your क्या नाम है, IV instrumental variable study design, two-stage least squares. What another kind of study design, difference and difference, regression or discontinuity design. I think that's not in the course. All right. Another, और इसके बाद अगर ये सारा काम नहीं किया तो और थोड़े से और टेक्निक्स, प्रोपेंसिटी स्कोर मैचिंग कर सकते हैं क्या, पैनल डेटा यूज कर सकते हैं क्या, ये सब चीजें अल्टीमेट चेज क्या कर रही हैं, क्लेम टू कॉजालिटी. Unless you're doing one of these things, you will not be able to give a convincing claim to causality. Now the thing is कि MLR जो है, multiple linear regression, does get you closer, right? So you can think कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि फोर्थ ईयर में जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी जो है ज्यादा CGPA उनका है और दे कम फ्रॉम बेटर फैमिलीज, तो तुम मेरे को ये बोलोगे तो हम तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं ना, ये टर्म्स एरर में है, इनको एरर्स उठा के डालो वापस. Instead of doing a simple linear regression, bring it out of the error term and you include it in the regression directly. Why not do that? Once you do that, then can you make a claim to causality? The answer is no, because ये तो दो ही वेरिएबल्स हैं, उसके अलावा बहुत कुछ हो सकता है. The very thing that the person may just be more, have some soft skills, right? Which makes the person likable in college also. So the person is like, हाँ मेरे को तो college अच्छा लगता है, I'll continue. And these same soft skills make the person employable or more employable also, क्योंकि labor market में भी बिकती हैं ये skills. The idea is that MLR कभी भी will not be enough to convince uh, uh, others, but it should not be enough to convince you also, भले ही तुम्हारा experiment हो, कि the claim to causality is satisfied. All right. So even if you have done MLR, still it is quite deficient. You will always have, there is always a possibility of something being in the error term, which can be showing up as one of the variables, right? So suppose you have this kind of beta 1 x1 plus beta 2 x2 plus all the way, है ना, beta k xk. बट कभी भी हम ये एरर टर्म लिखना नहीं छोड़ते ना, हमेशा लिखते हैं ना. क्यों लिखते हैं? इसीलिए क्योंकि हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते. हम आर्टिफिशियली बाहर से एक्सपेरिमेंट होने के बाद सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, और जब तक ये एरर टर्म रहेगा तब तक हमारा क्लेम टू कॉजालिटी खतरे में रहने वाला है. राइट? ओके. So then the question is that what is the ideal experiment?
आइडियल एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि suppose you have the freedom or you have the resources to set up an experiment and then make a claim whether or not something works, right? So suppose 4 year वाले कॉलेज में हमने डिस्कस किया कि जो है सबके लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दो, 3 year जब तक था वो भी सबके लिए कंपलसरी, 4 year भी सबके लिए कंपलसरी, कंपलसरी के साथ फ्री फूडिंग, स्टडिंग, लॉजिंग एंड सपोज कोचिंग बैन, है ना, तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो जो भी बच्चा पैदा हो उसको कॉलेज जाना ही जाना है, अगर 3 साल का है तो 3 साल के लिए जाना है, 4 साल का हो गया तो 4 साल के लिए जाना है। इन दिस सेटअप, yes, you can claim causality. So the ideal experiment is where there is no choice. Ideal experiment क्या होगा? जब participants के पास जो जो एक्चुअल में तुम्हारे ऑब्जर्वेशन यूनिट्स हैं उनके पास choice ना, they cannot self select, right? Observation units cannot self select. एक तो ये बात हो गई, ठीक है। दूसरी की अगर भाई सपोज फर्टिलाइजर वाला एग्जांपल है, उसमें ऑफ कोर्स सीड्स तो अपने आप सेल्फ सेलेक्ट नहीं कर पाती ना, तो सीड्स का तो वो चिंता खत्म हो गई। सेकेंडली, अब तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तुम्हें बाकी सारी चीजें कंट्रोल में करनी है, तो इसका मतलब कि यू विल ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग दैट इज इन योर हैंड्स। सो यू विल ट्राई टू कंट्रोल the quality of the soil, which includes soil fertility, soil porosity, um, the weather, the climate, the geography. तो ये सब तुम्हें कंट्रोल करना है ना। उसके बाद पानी कितना देना है, कैसे, सॉरी, पानी और सीड्स का क्वालिटी, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू डिसाइड। सो देन द सेकंड थिंग दैट यू नीड टू डू इज control or ensure Ceterus Paribus, right? Now, as you can imagine, एक आइडियल एक्सपेरिमेंट अक्सर या तो बहुत कॉस्टली होगा, जैसे हमारा 4 year वाला एग्जाम, 4 year वाला क्वेश्चन। इस फर्टिलाइजर वाले में ठीक है, वो भी चल जाएगा, बट अक्सर इट विल ऑल्सो बी अनएथिकल। थिंक अबाउट द हॉस्पिटल एग्जाम। You are, if you want an ideal experiment there, what is the ideal experiment? It will be, if you want to make a claim to causality, तो ideal experiment क्या है? मान लो कि तुम्हारे पास कुछ लोग हैं जो बहुत बीमार हैं, है ना, एक जैसे बीमार हैं, तुमने अलाउ किया नहीं, सिर्फ तुम जो है, the first 5 of you will be admitted, the next 5 of you will not be admitted to hospital, and then I will compare कि हॉस्पिटल से लोग मरते हैं कि नहीं मरते हैं। तो सेंस है इस बात की। So the ideal experiment is ideal, which means that a lot of times it will not be feasible. It may not be feasible in terms of resources, in terms of money, in terms of time. मान लो कि आज तुम्हें 4th year evaluate करना है, तो क्या तुम्हारे देश में एजुकेशन कंपलसरी था? क्या आज भी कंपलसरी है? नहीं है। क्या फ्री है? नहीं है। Not feasible, right? If suppose you wanted to say कि no, I'll then only compare, I'll compare people with similar CGPA, whether they enrolled in similar CGPA, similar family income, and everything else that I can think of. And what I'll do is I'll ask only like few of you, only say 50% of you can enroll in 4th year, बाकी को मैं enroll नहीं करने दूंगी। Unethical, right? So either it's unfeasible from the point of view of the money and the resources and the time, or it is it is ethically wrong, ठीक है। तो ये इश्यूज हैं, तो ये इश्यूज को हैंडल करने के लिए क्या क्या करना, पापड़ बेलने पड़ेंगे, वो हम इस कोर्स में बेलेंगे, ठीक है। All right, so I guess now that you understand, let me wrap up. So this is it. So what I tried to do in this lecture was tell you, first of all, कि correlation और causation में फर्क क्या है। All your regression coefficients, a regression coefficient, or say coefficients in a multiple regression model, they only get you as far as correlation, ठीक है। You cannot make a claim to causality just based on a regression. Why not? We discussed several examples.
हमेशा या तो एरर में कोई दिक्कत होगी या मतलब दीज आर एक्चुअली डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स लीडिंग टू द सेम थिंग, राइट? अगर तुम्हारा ऐसा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन जीसीएम इज वायलेटेड, इसका क्या मतलब है? लेट अस लुक एट एल्जेब्रिकली. सो जीसीएम वायलेटेड का मतलब है दैट सपोज द expectation of error when x is equal to x1 is some c1 and the expectation of error when x is equal to x2 is some c2, which means कि ये दोनों equal नहीं है ना? मान लो कि ये 0 है और ये 0 नहीं है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इफ यू टेक एनी एग्जांपल, हॉस्पिटलाइजेशन वाला ले लो, सीजीपीए वाला ले लो, फर्टिलाइजर वाला ले लो. हाँ, सपोज दिस इज योर लेट्स से सीड क्वालिटी. ठीक है, सो सीड क्वालिटी जो है, एवरेज सीड क्वालिटी व्हेन यू अप्लाई फर्टिलाइजर, एवरेज सीड क्वालिटी व्हेन यू अप्लाई फर्टिलाइजर इज सपोज ग्रेटर देन 0, मतलब अच्छा क्वालिटी है. और एवरेज सीड क्वालिटी व्हेन यू डोंट अप्लाई फर्टिलाइजर इज बेकार, मतलब उसमें जो सीड ही बेकार है, इससे कम है. तो तब हुआ तुम्हारा जीसीएम वायलेट. और तब आई दिक्कत जब तुम ये सारे क्लेम्स टू कॉजालिटी करोगे. और इससे दिक्कत और भी क्या आएगी? एल्जेब्रिकली क्या दिक्कत आती है? एल्जेब्रिकली दिक्कत आएगी कि तुम्हारा जो बेटा, दिस वुड इम्प्लाई that your beta 1 hat is biased. ये तो मैंने करवाया ही नहीं. This means what? ये था ना, this is the crucial assumption required for unbiasedness property of OLS estimators, right? So ZCM crucial for the unbiasedness property. Once this is violated, this property goes into the gutter. और इसका मतलब ये है that the expectation of beta 1 hat will not be equal to beta 1 ever. चाहे तुम कितना बड़ा सैंपल ले लो, चाहे तुम कितने सारे वेरिएबल्स इंक्लूड कर लो, what is going to happen is that you will be wrong on average also. Remember, किसी एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं सैंपल में योर बेटा 1 हैट इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू बेटा 1, है ना? ये था ना, बेटा 1 हैट का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है मीन बेटा 1 इफ जीसीएम इज सेटिस्फाइड. बट अगर जीसीएम सेटिस्फाइड नहीं है, सो इट विल ईदर बी लाइक दिस और इट विल ईदर बी लाइक दिस. तो तुम चाहे जितने पापड़ बेल लो, एवरेज पे भी यू विल बी रॉन्ग ऑन एवरेज. योर एक्स मतलब इवन इन एक्सपेक्टेशन यू विल नॉट बी राइट. Your OLS estimator will be biased. All right. Your OLS estimators will be biased. And depending upon कि कैसा correlation है between your error term and your x variable, it can be a positive bias or a negative bias. Right? So suppose जो ये MDM वाला example है, we can say that it is a negative bias. ये एक नेगेटिव बायस है क्योंकि ये जो हमारे एरर टर्म था, इस एरर टर्म में है हमारा फैमिली इनकम. और फैमिली इनकम और proportion of kids enrolled for suppose this is the average family income of the school. तो ये फैमिली इनकम और enrollment in eligibility for midday meals is inversely proportional. जब फैमिली एवरेज फैमिली इनकम ऊपर होती है तो द एलिजिबिलिटी फॉर मिड डे मील गोज डाउन, राइट? बट जब एवरेज फैमिली ऊपर होती है तो एवरेज स्कूल स्कोर भी ऊपर होता है. तो ये जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है इनका, ये बीच में इसके घुसेड़ने से हमको एक नेगेटिव रिलेशनशिप दिख रहा है. when this goes up, this goes down, this goes up, and because you ignored this omitted variable, you found this negative relationship and you wrongly concluded कि ये मिड डे मील का नेगेटिव इफेक्ट है, right? Because your beta 1 hat is biased. All right, and of course you cannot make a causal claim.
राइट। सो ये है हमारा स्टार अजम्पशन, जिसके वायलेशन से ये सारी दिक्कतें होती हैं। यू कैन इंक्लूड, एज आई टोल्ड यू, तुम इंक्लूड कर लो एवरेज फैमिली इनकम, बट फिर भी कुछ ना कुछ चीजें मिस होंगी, right? You cannot ever be so sure that you have included everything so that it's a ceteris paribus thing. You can get very close, right? Which is what people would do if ये सारे fancy चीजें हम नहीं कर सकते हैं, RCT, DID, IV. But technically, I mean, there's always room for doubt, which is not to say that a good multiple regression is not good enough. Hmm? Sometimes that's all that you can do. Data problem, ethical problem. But sirf saying from a statistical point of view, there's always room for doubt. Okay? So what we'll do now is to eliminate that room for doubt, or minimize it as much as it can be. Right? Okay. Okay, so that's it. So we discussed that what the difference between a correlation and a causation is, right? And then we talked about that what it means when we say causal, right? We mean ceteris paribus. Now, how do you express ceteris paribus in terms of in statistical terms, which is this, right? Which gives rise to the ZCM assumption, जिसका meaning हमने समझा. Basically, we do not want the error, the mean value of error to vary with the x variable. X के different जो हमारे independent variable है, जो हमारा treatment variable है, उसके value के साथ इसका average move ना करे, तब होता है ceteris paribus. और वही चीज है the zero conditional mean assumption. All right. And then we talked about that what an ideal experiment would be and how it is problematic a lot of the times. And then we talked about that what exactly happens when ZCM is violated. Of course, you cannot make a claim to causality. And even if suppose you did not want to make a claim to causality, suppose तुम्हारा aim ही नहीं था उतना high, फिर भी दिक्कत है. फिर ये दिक्कत है कि जो भी तुम्हारा बेटा बना है वो biased होगा. Alright, so this is something that अब छोटी बात हो गई क्योंकि ये तो होगा ही, बट अब ज्यादा बड़े कंसर्न्स हमारे इस कोर्स में ये हैं कि हम कॉजल क्लेम्स करें, और उसके लिए ये क्रूशियल अजम्पशन है. ओके, ऑलराइट, सो आई विल स्टॉप हियर टुडे एंड we will begin officially with the quant methods course, unit 1, and we'll start talking about, so correlation and causation I've already talked about, which is the first point. So maybe we'll briefly brush it up, and then we will start with mastering metrics and Wriston-Pishke. All right, guys, I hope that this was very useful for you in terms of getting all your revision in one go, and then starting with well revised set of concepts. And now we'll dive into the course. I'll see you there. All right. Bye-bye.